यस सर, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, चले आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बच्चे, आज का जो लेक्चर है उसकी लर्निंग आउटकम मैं पहले आपको बता देता हूँ कि आज के लेक्चर की जो हमारी लर्निंग आउटकम है वो क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर जो है ना हम आगे चलेंगे। ठीक है, आई आई एम आई कैन सी दैट देयर इज नो मार्शल इन द क्लास, सो आई विल बी स्पीकिंग इन इंग्लिश इन उर्दू। जब तक वो आ जाता है उसके बाद अगर वो क्लास ज्वाइन करते हैं तो फिर हम जो है ना इंग्लिश में स्टार्ट कर देंगे, बट उस पॉइंट तक हम उर्दू भी पढ़ते हैं। जो आज का हमारी क्लास है बच्चे, उसकी जो लर्निंग आउटकम है वो ये है कि आज हम एसक्यूएलाइट के ऊपर काम करेंगे कि किस तरह आप एसक्यूएलाइट जो है उसको यूज़ कर सकते हो। उससे पहले हम ये देखेंगे कि एक्चुअली एसक्यूएलाइट है क्यों और उसको हम यूज़ क्यों करते हैं। ओके, सो आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन विद यू गाइस। कैन यू सी द स्क्रीन? ये स्क्रीन आपको नज़र आ रही है बेटा? ये स्क्रीन नज़र आ रही है? यस सर, ओके आ रही है सर। ओके, तो अब क्या है बेटा, सबसे पहले इससे पहले कि हम स्टार्ट करें कि एसक्यूएलाइट है, जो एसक्यूएलाइट के ऊपर जो कोड है वो स्टार्ट करें, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एसक्यूएलाइट है क्यों और इसको हम यूज़ क्यों करते हैं। ओके, अभी तक जो हमने डेटाबेस पढ़ा है वो आपका फायरबेस है। ठीक है, वो आपका क्लाउड स्टोरेज है। आपने देखा होगा बहुत सी एप्लीकेशंस होती हैं जो जब आप उनको चलाते हैं तो दे डोंट नीड एनी ऑनलाइन कनेक्शन, कोई क्लाउड उनको स्टोरेज नहीं चाहिए होता है। जैसे कि आपकी सबसे पहले जो आपकी नोट टेकिंग एप्लीकेशंस होती हैं, तो वो क्या होती हैं, वो विदाउट वो आपके जितने भी आप एक ऐप बंदा है वो अगर क्या करना चाहता है, अपने एक नोट डायरी बनाना चाहता है, तो वो उसकी जो एप्लीकेशन होती है वो मोस्टली ऑफलाइन होती है। ठीक है, तो वो उसके लिए कोई ऑनलाइन जो आपका कनेक्शन होता है वो रिक्वायर्ड नहीं होता। इसके लिए हम क्या करते हैं, जब हमें जो आपकी एप्लीकेशन है वो अब डाटा स्टोर करना चाह रही है कि उसके ऊपर जो आपकी फिजिकल डिवाइस है रेदर देन ऑनलाइन इनटू सम क्लाउड स्टोरेज, उस टाइम पे हम जो डेटाबेस आपका यूज कर रहे होते हैं वो आपका एसक्यूएलाइट होता है। तो ये एक लोकल डेटाबेस है, ये ऑनलाइन डेटाबेस नहीं है। जो आपकी जो फिजिकल डिवाइस होती है उसकी जो स्पेस होती है वो चीज़ों को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इस चीज़ की समझ आ गई है कि ये आपका लोकल डेटाबेस है, ये ऑनलाइन नहीं होता। सपोज करें कि आपने एसक्यूएलाइट यूज करते हुए क्या किया है, एक लॉगिन क्रिएट किया है इन वन एप्लीकेशन, तो वो दूसरी एप्लीकेशन में अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, आपका जो डाटा होगा, जो आपने डाटा स्टोर किया होगा वो सिर्फ इसी लेक्चर उसी के लिए होगा, वो यानी कि इसी डिवाइस के लिए होगा। वो किसी और डिवाइस के ऊपर आप उसको नहीं देख सकते क्योंकि वो लोकली स्टोर हुआ है। ये ऐसे ही है जैसे आप एक मूवी स्टोर करें अपने लैपटॉप के ऊपर, तो वो किसी और के लैपटॉप पे अवेलेबल नहीं होती क्योंकि वो मूवी आपने कहाँ पे स्टोर की होती है, अपने लैपटॉप पे लोकल, आपने अपने लोकल मशीन पे की होती है। लेकिन जब आप मूवी क्या करते हो, कहीं अपलोड करते हो, जैसे यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड करते हो तो सबको अवेलेबल होती है। ठीक है, तो आपका वो क्या होता है, वो आपका क्लाउड स्टोरेज है। ठीक है, जैसे हमने फायरबेस पढ़ा, लेकिन ये हमारा जो है ये हमारा लोकल डेटाबेसेस है। तो आज हम यही देखेंगे दैट हाउ यू कैन क्रिएट लोकल डेटाबेसेस बाय यूजिंग द एसक्यूएलाइट, और उसके बाद हाउ यू कैन इंसर्ट गेट वैल्यूज एंड हाउ यू कैन शो दोज वैल्यूज ऑन टू योर रिसाइकलर व्यू। Okay, so let's get started into it. I know you guys are quite excited about it. We have learned a lot of things related to Firebase, and you were kind of bored. But today we are going to have uh, uh, about the have to learn things about the SQLite. Okay, तो सबसे पहले आपने बच्चे जो एसक्यूएलाइट है इसको क्रिएट कैसे करना है, डेटाबेस क्रिएट कैसे करना है। तो बच्चे इसका कोई डायरेक्ट वे नहीं है। देर आर सम सेपरेट प्लगइन्स जिनको यूज करते हुए आप क्या कर सकते हो, जो है वो फायरबेस का जो आपका एसक्यूएलाइट है उसका डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। बट जब आप सिर्फ एंड्रॉइड डिवाइस के अंदर आते हो तो इसको आपका प्रोग्रामेटिकली क्रिएट करने के अलावा कोई वे नहीं है। ठीक है, तो हम आज सबसे पहले अभी जो आज का लेक्चर है इसमें प्रोग्रामेटिकली करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि अगर थर्ड पार्टी जो टूल्स हैं या प्लगइन्स हैं कोई, उनको यूज करते हुए आप डेटाबेस जो है वो किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो उसके लिए सबसे पहले जो है वो क्या करनी पड़ेगी, आपने डेटाबेस क्रिएट करना है। ओके, तो मैं क्या करने लगा, आई एम गोइंग इनटू आवर दिस फाइल, और यहाँ पे जाके मैं क्या करता हूँ, एक बटन बनाता हूँ जो डेटाबेस को क्या करेगा, ऑन इसको क्लिक करेंगे तो डेटाबेस हमारा क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। तो आई विल बी सेइंग बटन मैच पेन ड्रैप कंटेंट,
और इसको मैं आईडी प्रोवाइड कर देता हूँ, क्रिएट डेटाबेस VPN। ओके, और इसका हम टेक्स्ट लिख देते हैं क्रिएट डेटाबेस। ओके, और इसको स्ट्रिंग फाइल में स्टोर। एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा। सर ये पॉसिबल है कि हम लोकल डेटाबेस से हम फायरबेस पे भी डाल सकें, जस्ट लाइक हमें जब इंटरनेट नहीं है हमारे पास तो वो हमारी लोकल डेटाबेस में चले जाए, और जब हम इंटरनेट से कनेक्ट हो गए हैं तो वो फायरबेस पे चले जाए। वेरी गुड क्वेश्चन यूसुफ। अब ये है कि मैं, चले ये बात जेहन में आ गई है तो आपने क्वेश्चन कर लिया, मेरे जेहन में भी आ गई है। जो आपका फायरबेस होता है, मुझे दूसरे डेटाबेसेस की बात नहीं कर रहा, सिर्फ फायरबेस की बात कर रहा हूँ। फायरबेस में ये होता है कि सपोज करें कि आप कोई डाटा अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका क्या हो गया है, नेट नहीं है उस टाइम पे, वो क्या करेगा, वो डाटा लोकली स्टोर खुद कर लेगा, और जैसे ही आप ऑनलाइन आएंगे वो ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा, आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं। आप ये करके देख लें कि जब आप डाटा क्या पुश करेंगे तो वो क्या करेगा, लोकली स्टोर कर लेगा इन, तो उसके बाद क्या करेगा, जैसे ही आप ऑनलाइन होंगे तो वो उसको सिंक कर देगा। सही है। उसके अलावा जो आपने क्वेश्चन किया है, हाँ जी वो हम कर सकते हैं। हम कोई ऐसा कोड राइट कर सकते हैं कि हम चेक कर ले कि पहले क्या हमारी डिवाइस ऑनलाइन है। अगर हमारी डिवाइस ऑनलाइन नहीं है तो हम अपना जो डाटा सारा है वो लोकली स्टोर करें, और उसके बाद जैसे ही हमारी डिवाइस, हम कोई एक वो ब्रॉडकास्ट रिसीवर रजिस्टर कर ले कि वो चेक करता रहे कि जैसे ही हमारी डिवाइस ऑनलाइन आए वो हमारा डाटा जो हमने स्टोर किया हुआ था उसको फेच करे और उसको फायरबेस में स्टोर करवा दे। दिस इज पॉसिबल, वी कैन डू दिस। जो नए ऐप्स आ रहे हैं जो हम आयोनिक फ्रेमवर्क पे बनाते हैं, मुझे उनका नाम भूल गया, वो उनमें यही चीज यूज होती है। जब तक आप ऑफलाइन होते हैं तो आप जैसे ऑनलाइन सारा होता है वैसे ही आप ऑफलाइन यूज करते रहते हैं। जब आप ऑनलाइन होते हैं आपका डाटा भी सिंक हो जाता है। एक्चुअली ये फायरबेस भी आपका वैसे ही करता है, ठीक है, फायरबेस भी आपका वैसे ही कर रहा होता है। ओके। जस्ट लाइक सर व्हाट्सएप पे भी ये हो रहा होता है ना कि जब हम मैसेज कर देते हैं तो वो वैसे वो वहाँ पे वो एक एक्सक्लेमेशन साइन सा रहता है, और जब वो इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो वो चल जाता है। बट उसमें सर व्हाट्सएप में वो मेमोरी, अपनी लोकल मेमोरी काफी ज्यादा ऑक्युपाई नहीं करता। नहीं, जब आज देखें, अगर एक डिवाइस है, एक एप्लीकेशन है, उसकी अगर नीड है कि उसने ये चीजें यूज करनी है तो डेफिनेटली वो करनी पड़ेगी। लेकिन आई होप कि उन्होंने काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड वे में वो किया होगा। और व्हाट्सएप आपका जो है वो है भी एंड्रॉइड वर्जन नहीं है, वो रिएक्ट नेटिव में बना हुआ है वैसे भी। श्योर सर, थैंक यू। और जी खिजर का मैं आंसर कर देता हूँ जो क्वेश्चन है। आई डोंट नो बच्चे कि उन्होंने क्या यूज किया होगा, मे बी उन्होंने एसक्यूएलाइट यूज किया हो, मे बी उन्होंने कोई और मैकेनिज्म यूज किया हो। ठीक है, ये तो डिपेंड करता है कि जो बंदा एप्लीकेशन बना रहा है उसने क्या किया। लेकिन अगर वो लोकली डाटा स्टोर करना चाहते हैं तो दे कैन यूज एसक्यूएलाइट। इट इज पॉसिबल दैट दे कैन यूज एसक्यूएलाइट। ओके, अब हमने बटन जो है ये हमने बना लिया है। वी आर गोइंग टू यूज दिस बटन। उसकी मदद से हम क्या करेंगे, फिर हम इसको जो है वो डेटाबेस हम क्रिएट करेंगे अपना। जब डेटाबेस क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ना है बच्चे, एक सेपरेट क्लास बनानी है जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, डेटाबेस क्रिएट करेंगे। ओके जी राशिद। सर वो असद को इनवाइट कर लें, वो मैसेज कर रहा था। अच्छा चलो मैं इनवाइट। सर और उस्मान नजीर बाजवा, इसको भी इनवाइट कर लें, ये भी मैसेज कर रहे हैं। उस्मान और असद, ये बच्चे इनविटेशन सेंड कर दिए। ओके, अब क्या है बेटा, अब हमने सबसे पहले जो है वो क्लास क्रिएट करनी है। तो क्लास क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है, राइट क्लिक न्यू, और इसको मैं कह देता हूँ आवर एसक्यूएलाइट डीबी। ओके, और ये ओके। अब ये आपने एसक्यूएलाइट जो है, लेट मी रीफैक्टर इट, वो कोई एरर दे रहा है। एरर से मुराद है कि वो दे रहा है जो आपका है टाइपो एरर दे रहा है। तो आई एम गोइंग टू रीफैक्टर इट। इसको हम कह देते हैं, ये देखा नीचे लाइन आ रही है एसक्यूएल। ओके, अब बच्चे जब आप क्या करते हो, आपने अपनी एक क्लास क्रिएट कर ली है तो आपको फायर जो एसक्यूएलाइट की जो फंक्शनैलिटी है उसको अगर लेके आना चाह रहे हो अपनी इसके अंदर, अपने डेटाबेस के अंदर लेके आना चाह रहे हो, अपनी क्लास जो आपने क्रिएट की है उसके अंदर लेके आना चाह रहे हो, तो इसके लिए आपको एसक्यूएलाइट की जो ओपन हेल्पर क्लास है वो आपको क्या करनी पड़ेगी, इसके अंदर एक्सटेंड करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ एक्सटेंड्स और उसके बाद एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर क्लास।
आप इसको आपने क्या कर देना है, इसको आपने ऐड कर देना। ओके, so after adding the SQLite, all you have to do is to implement the requirement that we need in order to extend this class that we have to do. Okay, so I have to press Alt Enter, and after that you will see the option of implementing method. So just you have to click on implement methods, and implement methods. After implementing the method, you will see that there are two options that you have to there are two options for the method that you have to implement into your class. Okay, so I will be using the on create and on upload methods. Okay, and as you can see, it has after pressing that, after using that option, it has overridden both of the method. First one is on create and the second method is on upgrade. Okay, but as you can see, we're still getting the error onto our SQLite DB class. Okay, for this purpose, to remove this, what we have to do is to press Alt Enter again, and you will see it is saying that create a matching constructor. Okay, matching super constructor. It means that we have to create a constructor same as it has been created inside our SQLite Open Helper class, which is our the super class in this case. Okay, so I will be choosing this option from here. Okay, and it is saying it will give you guys a different options from the list, and you can select any of these options because we are going to change it. Okay, so I would be selecting this option, and as you see that it has implemented the super constructor over here. Okay, but what I'm going to do, I will be removing these options. Okay, as we don't need it right now. Okay, so as you know that SQLite in the as our SQLite, which SQLite database is not a NoSQL database, so it is a SQL database. So first we have to provide the name for this database that we want to create, and then we have to provide the version for the SQLite database as well. Okay, for that purpose, first I'm going to define the name for our SQL database. Okay, so I will be saying private static final string. Okay, and I'm going to name this constant database name. Okay, and let's suppose that I'm going to give the name. I will be saying my DB, and after that you have to provide the extension for this database as well, and that is DB. Okay, first you have to declare the name as final and static because you're not going to change the name of database later. Okay, so if you want to change the name later, then you're not going to declare this final. Okay, so now the next thing that I need to define is, as you know, as you have read this into your databases subject, into your databases courses, that you need to specify the version of database as well. So here, as we are creating the database programmatically, so we have to specify the version of our database as well. Okay, for that purpose, I will be using the private static final int. Okay, and let me say this is database version. Okay, as it is int, so I will be saying that this is the first version of our database. Okay, the next thing that I need to do over here, as you can see that I have changed the constructor of our SQLite DB class, but we have to specify in order to implement the SQLite Open Helper class in the constructor of our SQLite DB class, we have to specify the matching constructor for our super class. But we have specified that constructor, but we can see that there is error over here. It is saying that we cannot resolve these symbols because I have removed those variables, local variables from the parameters of our SQLite DB constructor. Okay, now I'm going to replace this name with the database name. Okay, and for the factory, I will be using the null. Okay, and for the version, as you know that we have defined the database version, so I will be using that version over here as well. Okay, now the next thing that I'm going to do over here, I'm going to get the context from our main activity.
Okay, for that purpose, I'm going to define a class variable over here, and I would be saying constant. Okay, and to initialize this constant, what I have to do is to call this constant would be equal to local constant. Okay, so the next thing after defining the database name and database version, the next thing that we have to do is to create table inside our database. Okay, so the method that will be run when you will call the when you will first create the constructor, or when you will try to create the database, then this is the method that is going to run, okay, on create. And this is the method that is going to run when you're going to upgrade your database. And here upgrade means that you may add new database, new table inside the database, or you may add or remove a table from the database, or you may change the columns inside your database. Like in the start, it may have three columns. First one for the name, one for the email, and one for the ID. And later on, you're going to add one more column into it, and that is suppose that you call it city. Okay, so that is upgradation of the database. Okay, if you are adding the values inside the existing table, that is not the upgradation of the database, that is basically the upgradation of your table. Okay, so this method, which is on upgrade, will be called when you're going to upgrade your database, not your table. Okay, and this method, which is on create, this is going to be called when you're going to create your database for very first time. Okay, so it is obvious that you're going to create the tables in your database when you're first going to create your database. Okay, for that purpose, I will be using a query to create a table inside our database. Okay, so can someone of from you guys tell me the query, that what is the query to create a table inside a database? Any one of you? Any one of you guys can want to tell me that how to uh, create a table inside a database? इसमें कमांड लगती है, आप क्रिएट टेबल, उसके बाद वैल्यूज देते हैं, उसके साथ उसके बाद आप आगे उसको नेम्स और वैल्यूज बताते हैं उसके अंदर. Okay, so I will be using a string over here. Suppose that I'm going to say, okay, as Ali Shiraz has specified inside the chat box, we can use the, here we have to use the SQLite queries, SQL queries to create the, to perform the different queries or different operations inside our database. This is same as SQL queries. Okay, so I will be saying private string create table query, and I'm going to say create table, and here we have to provide the name for the table, and I'm going to say suppose that my table. Okay, now after providing the name for the table, next thing you need to do is to provide the is to specify the fields inside your table. So first I'm going to say suppose that name, and what would be the type of this name, and I'm going to say varchar and 255 characters. Okay, the next thing that I want to have inside my table is the email. Okay, and email would be of the type varchar. Okay, again I'm going to say varchar. Suppose that this is of 4 characters as well. Okay, after creating the query, we have to terminate the statement as well. Okay, so now we have created a query that is going to create a table inside our database. Okay, so as I earlier told you guys that this is the method that is going to run when you're going to call, when you're going to first create your method. Okay, so let me sound this method with high-tech block. We get some exception. In case we get some exception, so this will be on create db. Okay, and we will get that exception. Okay, now the next thing that we need to perform over here is to call that query. Okay, for that purpose you can use the SQLite database. Okay, SQLite database object to run the queries inside your on create method. Okay, now
to run that query, which is create table query, I'm going to call this object SQLite database dot exec SQL. Okay, and inside it, I have to pass the query that I want to run inside this method. Okay, so I will be calling this create table query. Okay, and if it is going to successfully run, it will not throw any kind of exception. Okay, so in case we are going to get any exception, it means we are unable to create our table inside our database. But if we have created and executed our query successfully, then this is not going to throw any kind of exception. So if it is not going to throw any kind of exception, then we will toast right after the 26th line. We're going to toast that database with table has been database with the table has been created. Okay, so we have created we have write two lines of code. First one is going to create the table inside our database, and the name of our database is mydb.db. Okay, and after that, if it is not going to throw any kind of exception, then it means that the database has successfully been created with the table that we want to create inside our SQLite. Okay, so now the next step is to execute this. For that purpose, I would be going over here, and here I'm going to create a method public void create database. Get log create db. We can write you can write your exception in the log card as well, but it is quite easy to get things inside in the form of toast. So that's why I'm going to use the toast. Okay, so first you need to create the object of your as our SQLite DB class. I will be calling object SQLite DB class. Okay, now as you have created this object, I'm going to create another method over here. This would be private by initialize variables. I will be copying this code from here. Okay, and this would be inside initialize method. Here inside this initialize variables, I'm going to call that object SQLite would equal to new SQLite, my new our SQLite. And as you know that inside the constructor of our SQLite DB class, we have passed one parameter which is of type context. So we have to pass the context as well. So I'm going to pass this keyword to represent our current object. Okay. Now you have to call this initialize variable over here as well. Okay. So I will be calling initialize variable so that so we can write this code over here. But as I already told you in previous lecture that you should have some separate method to initialize all of your variables instead of writing everything inside your own create method. Okay. So now I'm going to grab it. The next thing you need to do is to call object SQLite dot. First, you have to create the object of SQLite database class as you have created, and with this, we're going to call the get readable databases. Okay, so in this way, you will be able to call the create the object of your database. Okay, so first I'm going to dot get readable databases. Okay, as we are not going to perform any kind of operations right now, so it would be so it is not necessary to create the object of SQLite databases class. We are going to only call the get readable databases. This method will try to get the databases that has been created. Okay, so now on click of this method, I'm going to call, as you know, to make it clickable, we have to pass the object of view as well. Create. So now what I'm going to do is to run
if we successfully execute our data, successfully create our databases as SQLite databases and with the table, my table inside our databases, then we're not going to get any kind of exception. Okay, for that purpose, let me first run it. Sir, Okay, so now what I'm going to do, I'm going to go share the screen with you guys. Okay, so you can sir, see this. सर आपने ऑन क्रिएट पर वो कॉल किया एग्जीक्यूट किया क्यूरी और उसके बाद आपने ये फंक्शन में गेट रीडेबल डेटाबेस किया तो ये क्यों किया? वो तो जब क्रिएट होगा तभी नहीं बन जाएगी मैं डेटाबेस। बताता हूँ कि क्यों किया. Okay, so now what I'm going to do, if I share you, let me run this. Okay, so I will be clicking on create database. Okay, so as you can see that the table has been created. Okay, the one more thing that I want to share with you guys, that when the first time you're going to run this code, it is going to create the database. Okay, so kindly you should turn off your mic, please. Okay, so if later on, if you try to execute the same query, like if I try to click on this method, this button, it is not going to call that on create method again. The reason behind it that you cannot create database more than once. It will check, this code will check that if there already exists a database with the same name, that it is not going to create or override the previous database. Okay, so if there is no database with the same name, okay, then it is going to create the new database in the local space of your application. Okay, so let me go back onto our databases. G Ali, what was your question? Kindly repeat. सर मैं कह रहा था कि आपने ऑन क्रिएट पर ये जो हमारी क्यूरी थी वो आपने एग्जीक्यूट किया और यहाँ पे वो टोस्टर डेटाबेस रीडेबल डेटाबेस विद टेबल हैज बीन क्रिएटेड तो फिर आपने जो ऑन क्रिएट डीबी बनाया था डीबी क्रिएट डीबी बनाया था फंक्शन उसमें आपने रीडेबल कॉल किया था वो क्यों किया था ये पूछ रहा था वो आपने बता दिया कि वो चेक करेगा कि अगर चेक कर पहले से कि है या नहीं है, अगर नहीं है तो यस सर कर देगा, क्रिएट कर देगा, अदरवाइज जो है उसको ओवरराइड नहीं करेगा. ओके, so after as you can see this screen, the next step that we are going to perform over here, that how you can add values inside your SQLite database. Okay, for that purpose, the first thing that I'm going to do as get values from the user. For that purpose, I will be creating two header text, first for the name and the second one for the email, and we will be getting those. Let me on the mic of some of you guys. Okay, so first we will be creating two header text inside our application. First would be for the name that we have given over here, and second would be for the email. Okay, so I will be creating two email over here, two header text over here. First one, master web content. Okay, let me provide the ID, and this would be, and this would be below of our create here, and the hint that I'm going to give, enter the name here, and let me store this inside our same file. And the next that I want to have is 10. Let's make it 20. Okay, that's it. The next thing that we want to have over here is one add text for the email as well, web content. Okay, and now I'm going to provide the ID to this as well, and the ID I'm going to name this email. Okay, and this would be below of our name. Okay, now I'm going to provide that enter the email here. Okay, let me get this into our same file. Okay, and
the input type that I'm going to provide over here, input type is text email address. Okay, and let me set the next focus into it, and that could be our ability. Okay, after this, we are going to have a button that will actually add values inside our database. Okay, so button, I'm going to get it match parent, and after that, wrap content. Next thing that we need to do is to provide the text. Let me say add values table instead of database, adding these into file, and now we need to provide ID, add value table, and this would be below of our community. Okay, so the next thing that we need to do is to get these to add a text into our Java file as well. For that purpose, I will be going back into our Java file, and what I'm going to do over here is to create two and a text. First one would be for the name, and second one would be for the email. Okay, now we have to initialize this. It means that we need to get emaility equals to find you by ID r.id, and it was first one first email, and the second one suppose that I'm going to get the find you by ID r.id, and this was name. Okay, let me turn off the mic of Yusuf. Okay, and as you have connected both of your XML edit text with the name with the Java edit text, the next thing that you need to do is to create a method that is in that would be that we are going to use to insert values into our database. Okay, no problem, Yusuf. So I will be creating a method public void insert values table, and to make it clickable, I'm going to use for subject of view. First thing that you need to do is to surround this with a try-catch block. So I will be saying that initialize and get that result. Okay, so in order to insert values into table inside your newly created database, the thing that you need to do is that first we have to create the object of your SQLite database. Okay, so here the point that I'm going to tell you guys that if you want to perform any kind of queries inside your SQLite database, for that purpose you will be needing the object of your SQLite database class. Okay, for that purpose I will be going inside our method, and first I will be creating the object of our SQLite database. Okay, initialize the object of SQLite database, you have to call the object of your database class. Okay, that as you already know that this is our database class in which we have override two methods on create and on upgrade, and at the same time we have performed the query to create the table inside your database. Okay, now what you're trying to do over here, you're actually trying to write something into your database. Okay, for that purpose, instead of calling that readable database, you are not going to get something out of your database, you are actually trying to push something into your database. Okay, so you're trying to write something into your database. For that purpose, you have to call the get writable database. Okay, so after calling the get writable databases, first thing that you need to check that either your SQLite database object has been initialized or not. Okay, for that purpose, I will be calling SQLite databases. If not equal to null, it means that it has successfully been initialized. As we will be saying that host is to initialize will
whatever, and then we will be uh, if we have successfully initialized the object of our SQLite database class, then the next thing that we need to tell that user should not be entered empty values inside our database. So for that purpose, we have performed this step countless times. I'm not going to explain this again. I'm going to quickly wrap this up. Okay, so this first one will be for the and the second one would be for the email. Okay, so if okay, so if you have successfully validate your edit text here, next thing is to put these name and email into your SQLite database. For that purpose, to put these value into our databases, I'm going to use the content values object. Okay, content value same as we have used the map. Okay, it will be used as same in the similar way as we used to create the map. Okay, so let me show you guys. First, we have to create the object of content values. Object content values. Okay, new content values. Okay. The next thing that you need to do is to put values inside the content values object. Okay, so I will be calling the content value dot put. First, you have to provide the key, and key would be same as you have declared field inside your table, that is name and email. So first that the first thing that we need to add is the name. So I will be using the key as a name, and the second thing is the value for the name. Okay, I will be calling the cat name it is cat text dot to string. Okay, the second thing that we want to put or push inside our content values object is the email, and it should be same as we have defined over here. Otherwise it is not going to push values into your database. Okay, so I will be putting the name, and we are going to get this value from the email dot contents dot to string. Okay, so after putting the values inside the into our content object, the next thing that we need to do is to call the SQLite databases object to insert the values inside our databases. Okay, for that purpose, I will be calling the